without human intervention. Automatically without human intervention. मतलब आपको कुछ नहीं करना है. System should be such that it is automatically transmitting. In most cases, the SATC has got this feature. So one of the SATC is designated for transmission of LRIT data. Any other equipment which can do this, transmission of position report automatically can be used as LRIT or LRIT equipment rather. Since it is a worldwide system, so the communication system also has to be worldwide, and that is why the need for a satellite system, because satellite normally gives global coverage. Inmarsat is the most preferable kind of satellite system, but this gives coverage between 75 north to 75 south के बीच में, latitudes के बीच में coverage आता है. In the polar regions, there is no such coverage. When the ship is sailing in A4 areas or areas where there is no satellite coverage, they may have to choose alternate system of transmission, maybe some other kind of satellite system, which are of course available. The whole system requires a lot of infrastructure, a big infrastructure. So we are going to talk about the structure of the system, starting from the ship. When the ship is transmitting, the ship's equipment, we have spoken a little bit about it, that any equipment can be used as LRIT, but most likely the SATC. What is transmitted as position report? The ship's ID, position, latitude, longitude, and date and time of position. These are the data which is transmitted. So we'll do this on the board. You should follow the diagram, the flow diagram, how the data is flowing from one end to the other, and to understand the overall scenario of LRIT system. So we'll go to the board, take out your pen and paper, make this flow diagram as we are doing it on the board. The board I have is a small one, so I will make one part, then delete, then start the next part of it. So अपने पेपर में जगह बना के रखिएगा, या उसको landscape mode में आप diagram बनाइएगा, so that you have better space to do that. Let us go to the board. So is the board visible to you all? Yes, sir. Yes, Okay. sir. All right. So first is the ship's LRIT equipment. We spoke about this. What can be the ship's equipment? Any system which can transmit position reports automatically. So there are 4 PRs, position reports, transmitted daily, comprising of ship's ID, then position, then date time of position. So this is the position report. When this transmitted, we are using satellite system. So in the satellite system, there will be the satellites here. Don't make this part you don't make.
यहां तक बना लो, उसके आगे नहीं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या है मैं आगे। So the satellite system, the ship is transmitting data to satellite. Satellite is transmitting back to LES. LES may use landline network like microwave link, VHF link, etc., cables, fibers, and then it will go to the recipient. रेसिपिएंट कौन है? जो रिसीव करेगा। जिसने भेजा तो कोई रिसीव करेगा, तो रेसिपिएंट। अभी बनाइएगा मत। So all this system which is used to transmit the data from ship to the shore is given one name. सब इंक्लूड हो जाता है एक ही में, सैटेलाइट सिस्टम, एलईएस, लैंडलाइन, फाइबर केबल्स, etc. All that is covered into one, and that we are calling as CSP, Communication Service Provider. What is the function of this? क्या करता है? तो शिप का डेटा शोर पे भेजता है। Don't write this. So the job of the CSP is to securely transfer the data to recipient. This is the job of the CSP. CSP में सब include हो गया, satellite, landline, LES, or everything. Then this data is transmitted to the recipient. Now, who is the recipient? Recipient is something called ASP, Application Service Provider. The whole system is an application. Basically, the LRIT transmission of data, it has to be collected, etc. So the job of the ASP is to add data to this small report. छोटे रिपोर्ट को बड़ा रिपोर्ट बनाता है। बड़ा में क्या? तो adds data. Data is added to small PR, जिसमें छोटी सी चीज थी उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है, so that it can be identified later कि कहां से आया, कब आया, कैसे गया, वगैरह वगैरह. So what kind of data is added? Ship's name, call sign, IMO number. Then अपनी आईडी भी ऐड कर देता है, और आगे जिसको भेजेगा, किसको भेजेगा? तो आगे ये भेजेगा डेटा सेंटर को, LRIT डेटा सेंटर. So it is also adding the ID of the data center. We write it data center ID. This ID is also added to this. Then also various timestamps. ये timestamp क्या है? Just the date and time of an event. यहां से इतने बजे भेजा था, this is the timestamp. इतने बजे चली. अगर इतने बजे चली तो इतने बजे पहुंची होगी, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 2 मिनट, 1 मिनट, तो वो भी एक टाइम स्टैम्प है कि इतने बजे रिसीव हुआ. इन्होंने सारा डेटा ऐड किया, कितने देर में ऐड कर लिया, वो भी एक टाइम स्टैम्प होगा कि इतने देर में इन्होंने अपना ये डेटा ऐड करने का काम कर लिया. फिर उसके बाद इन्होंने आगे ट्रांसमिट कर दिया, वो भी एक डेटा टाइम स्टैम्प होगा. So various timestamps are added so that later on a report can be tracked, it can be audited properly
कि कहाँ चली थी, कब चली थी, कैसे, कहाँ से, कितने देर में फॉरवर्ड होता रहा. So the ship's equipment is transmitting the data via CSP to ASP. ASP is adding all this data and forwarding to LRA. Now ये ASP है कौन? जहाज का तो समझ में आ गया कि जहाज आपने देखा हुआ है. इनमारसैट सिस्टम को आप समझते हैं, मोर और लेस, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बट समझते हैं. आप जहाज में से फोन करते हैं, फोन घुमाते हैं, घर पे बात होती है. कैसे बात होती है? तो सीएसपी से, जो कम्युनिकेशन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके थ्रू आपकी बात होती है. Here CSP is transferring digital data ashore. It is going to ASP. ASP is an entity appointed by the flag state. एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई आपका काम LRIT डेटा कलेक्ट करना है. आप शिप से डेटा कलेक्ट कीजिएगा, उसमें डेटा वगैरह ऐड करना है जो वो कीजिएगा, रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुझको भेज दीजिएगा. सो वर्चुअली दिस इज विद द फ्लैग स्टेट. LRIT data center is in direct control of the flag state. ये flag state के पास पहुंच गई. For example, in India, DG shipping. So all the Indian ships are going to transmit the data to DG shipping. Finally, it will be reaching to DG shipping. बट डीजी शिपिंग के पास पहुंचाएगा कौन इसको? फाइनली कौन पहुंचाएगा? सर एएसपी, डेटा सेंटर. नहीं, डेटा सेंटर के पास पहुंची है, इसके पास पहुंचाएगा कौन? एएसपी. एएसपी सर. ओके, सो एएसपी कौन है? इन इंडिया एएसपी इज टाटा कम्युनिकेशंस. टाटा कम्युनिकेशंस एक प्राइवेट एजेंसी को ये जॉब दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि इट इज योर जॉब, यू विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द शिप्स एंड पास इट ऑन टू मी. सपोज आई एम डीजी शिपिंग and one of you is the Tata Communication and remaining all our ships. तो आप सभी जहाजों से डेटा कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और मुझको फॉरवर्ड करेंगे. I am DG shipping. Let us say Divansh is the ASP Tata Communications and rest all of you, Mudit, Ridesh, Aditya, Gautam, Ankit, Amandeep, everybody is the ship. So Indian flag registered vessels, let us say there are 200 ships. So all the 200 ships are transmitting 4 reports daily. So data center में कितने reports daily जमा हो जाएंगे? 800. 4 into 200, that is 800. 800 reports will be collected here. So एक तो रन टाइम पे ये है ASP का काम कि डेटा ऐड करेगा, बट देयर आर एडिशनल ड्यूटीज आल्सो, रिस्पांसिबिलिटीज आल्सो ऑफ द ASP. क्या क्या करता है ये? तो ASP के ही बंदे आपके जहाज पे आएंगे पहली बार. When the LRIT system is being installed and initiated, people from ASP will come on your ship physically. एक या दो बंदे आएंगे और आपके LRIT सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे. So configuration of LRIT equipment is also done by the ASP. After they have set up the system, they will do the testing of the same. ये सब काम कर रहा है या नहीं, सब ठीक ठाक है. Then they also certification. They give you a certificate on board ship that you are now LRI compliant.
This certificate is known by the name of LRIT Conformance Test Conformance Report. मतलब उन्होंने जो टेस्टिंग करी उसकी सर्टिफिकेट देते हैं कि you have been tested, your system is working fine. Then in the later system, they are also responsible for monitoring. They keep on monitoring all the 200 ships. Who is transmitting, who is not. अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सब ठीक चल रहा है. अगर ट्रांसमिट करना बंद कर दिया किसी शिप ने किसी वजह से, इक्विपमेंट खराब हो गया, लॉग ऑफ हो गया, सैटेलाइट से लॉग ऑफ हो गया, तो दे रिपोर्ट इट टू द फ्लैग स्टेट. ये so and so ship is not transmitting. The flag state will get to the owners will get to the ship. The ship will find out the reason, what is there, and accordingly action will be taken. So these are the 4 basic responsibilities of the ASP. While they are monitoring, they are also doing this function on a regular basis, adding data to the small report and forwarding it to the data center. ASP can also remotely get to your ship. ASP can send a command to the ship. AIS में हमने polling पढ़ी थी. ASP can poll the ship, try to find out the current location of the ship. अपने आप नहीं करेंगे, जब flag state बोलेगा तब करेंगे, लेकिन they can remotely poll the ship's LRIT equipment to find out current position. Also, the 4 reports which are sent daily, that means every 6 hours, can be changed by the ASP directly through remote control. They can change it to not 4 reports, but 8 reports daily. Or maybe 16 reports daily. They can reduce the number of duration. They can change the duration. Not more than 6, but less than 6. Yes. बोलेंगे 24 रिपोर्ट भेजो डेली. एक घंटे में रिपोर्ट भेजना शुरू करेगा आपका इक्विपमेंट. Why? Because ASP has changed the duration. For example, let us say the ship is passing through HRA. Lot can happen within 6 hours. So the flag state wants to monitor this vessel more closely. They don't want to give 6 hours of time. So the flag state will tell the ASP. ASP will remotely set the timing of this to 24 reports a day. हर घंटे में ट्रांसमिट करेगा. और 48 रिपोर्ट्स हर आधे घंटे में भी ट्रांसमिट करता है. Minimum time is 15 minutes. Maximum 6 hours. Minimum duration 15 minutes. Every 15 minutes, the data can be transmitted by the ship. All can be set by the ASP. The ASP can also reset the whole system remotely again. क्योंकि एक बार तो करके उन्होंने कर दिया सब. अब जो जहाज निकल चुकी है, तो remote control command से they can do so many things. They can poll your ship. They can reset the ship. They can change the time of transmission, etc., etc. So part of the system is remotely controlled by the ASP. All is done only when the flag state is requesting them. इनका अपना private role तो कुछ है नहीं. भाई जहाज है चल रहे तो मुझको क्या करना. But flag state is responsible for the safety and security of the ship. So they only say to them, to ASP, what they require from the ship. Remember the initial communication, initial class that we talked about? That each ship is required to transmit position report to its own flag state. That means yes sir. all to, हाँ बोलिए.
Yes, somebody saying something? सर इससे हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगी क्या? जैसे जैसे एएसपी में ही, जैसे टाटा कम्युनिकेशन आपने बोला, टाटा कम्युनिकेशन से अगर किसी ने हमारा डेटा लीक कर दिया विदाउट हमारी अथॉरिटी को बोलते हुए, फ्लैग स्टेट को बोलते हुए किसी ने लीक किया, तो वी माइट गेट स्ट्रक समवेयर, और उससे हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को डेंजर है. So why we are depending on ASP? Because it is a private authority who is handling the ships. Okay. Okay, which ship you are working on? Which company? Sir, Bernard Schulte. Huh? Sir, Bernard Schulte. Bernard Schulte. Okay, Bernard Shaw. Suppose एक शिप ले जाकर के अपने जहाज को उड़ा दे, ऐसा करेगा क्या कोई? नहीं सर, बर्नार्ड शूल्टे नहीं उड़ाएगा. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, मैं ये कह रहा हूँ कि when they are given, there are certain rules and regulations that they have to follow. If they are not doing, they are breaking a rule which is not allowed for them. ब्रीच हो सकता है, लेकिन उस ब्रीच के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट जब बनती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड that these are the things that you have to do. When you go for the second mates exam, the rules are defined that you must write your own answers, do not cheat, you can use this, you can use calculator, etc. You follow those rules or you don't follow those rules? Yes sir. You follow those rules, and when you are not following those rules, then what happens? Action is taken against you. Yes sir. So under the contract it is defined that it will not be leaked by your company, and also the ship is in Atlantic. If it is leaking the data that the ship is in Atlantic, how it is going to matter to you when you are in Atlantic? Anyway, वो सब hypothetical situation है. Here we are studying what is happening, how it is happening. We are not much asking why it is happening or why not it is happening. We are not asking that. This answer which I am giving is to cut down the discussion small, because that is useless communication. That is useless. ठीक है, आपकी query है. I can understand that you are thinking. Thinking is a good faculty, I would say, but here not required. अभी मान लीजिए कि फ्लैग स्टेट के पास आ गई, फ्लैग स्टेट में किसी ने चोरी कर लिया डेटा और किसी को लीक कर दिया, तो who was I speaking to? मैं किससे बात कर रहा था? Who was speaking to me? आपकी आवाज थोड़ी सी माइक्रोफोन नजदीक लाओ ना. सर विपिन मिश्रा. Okay, I could not hear the name, but nonetheless, अगर ये लीकेज फ्लैग स्टेट में किसी ने कर दिया तो क्या करेंगे? अगर प्राइवेट कर सकती है तो आदमी ही ना सब जगह. यस सर, मैं क्यों इतना पूछ रहा था कि सर ये कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी क्यों नहीं करती है, क्यों इसे प्राइवेट में दिया गया है बस. ओके ओके, तो जैसा अभी हम देखते हैं, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम गवर्न करना है. तो गवर्नमेंट इस बात में इन्वॉल्व नहीं हो रही, निटी ग्रिटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रही है. वो ऊपर से देख रही है कि सब कुछ चले. दे आर गेटिंग थिंग्स डन. A manager does not do the job, he gets the job done, and the administration, the government is the manager. The job of the government is to manage the country, not run the country. Government जाकर के जूता सिलाई नहीं करेगी ना. Common sense. So it is getting it done. Having said that, it may be possible that some government is forming a new department. जैसे डीजी शिपिंग है, शिपिंग को देखने के लिए
हो सकता है डीजी शिपिंग एक दूसरा क्रिएट करे अपना डिपार्टमेंट LRIT के लिए, SP का काम करेगी, इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट अ रूल कि इट विल बी प्राइवेट एजेंसी. Here in India, it is private agency. There may be other private agencies in the other countries also. It may be possible that it is done by the government department itself. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. ठीक है. All right. So similarly, now you can understand that 200 ships transmitting to DG shipping because these were all Indian. So similarly, there will be other countries, let us say Australia, USA, Japan. There are so many countries in the world, they will all do the same thing and each will be having a DC data center, correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So all these countries are having data centers. All have got the ships which are registered with them only. Each one is having data of their ship. Let us say somebody is depend microphone off karo apna. हाँ. Let us say Australia, there are, let us say 600 ships. All the 600 ships data is available at Australian DC. USA, let us say 500. All the 500 ships data is available with the DC. तो ये आ गया तो इनके पास अब करेंगे क्या इस डेटा का? What is the use of this data that they have collected? What is the use once they have received this 800 data, 800 reports per day? Then what is the use? क्या करेंगे उसका? Purpose of LRIT. Do we remember that? What is the purpose of LRIT? अगर कोई वेसल विसिनिटी में हो तो उसकी हेल्प हो सकती है इस डेटा के हिसाब से कि उसकी लास्ट पोजीशन क्या थी. वेरी गुड. तो सर्च एंड रेस्क्यू में काम आ सकता है ये, वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ LRIT. और क्या था पर्पस? सर कोई भी ऑयल पोल्यूशन वगैरह तो कहीं पे हुआ हो किस एरिया में तो वहाँ पे कौन से वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड देवांश. सो मैरीटाइम पोल्यूशन कंट्रोल, सब जहाज को मालूम है कि लोग सर पायरेसी अगर हो, सर पायरेसी का अगर हो, SSAS कहीं किसी ने भेजा हो वहां से तो हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. सो सर्च एंड रेस्क्यू हो गया ना? सर्च एंड रेस्क्यू हो गया. यस सर. हाँ. Okay. So the prime objective was maritime security, maritime pollution control and search and rescue. These are the three purposes. तो इन तीन पर्पसेस को पूरा करने के लिए किसी कंट्री में कौन से यूजर्स हैं, कौन से एजेंसीज हैं, ऑथराइज्ड एजेंसीज, ओनली दे कैन यूज दिस डेटा. सो डेटा which is received by the flag state is government data. It is not public data. ये आपको मुझको नहीं मिलती है. See that the ship is sending the data finally to flag state. So it is private data, government data, secured data. Only government agencies can use this data for rendering the services that they are supposed to. So there will be authorized users. There will be authorized users of LRIT data. Who are they? सबसे पहले flag state itself, then the port states, all the ports of the country for maintaining their operations, then delivering their operations or taking care of their port operations. They may require this data. Who is coming to my port? Where is he now? When is the ETA, etc., etc. So all the ports of the country will be able to use this data. Next one is coastal state.
Coastal state is the agency which is responsible for coastal security, securing the coastal area so that there is nothing wrong happening in my coastal areas. So for example, in India, who will be responsible? Coastal area security, who will be responsible? Indian Navy. Indian Navy, very good. Indian Coast Guard, good. For example, in USA, who will be responsible for their area? US Coast Guard and US Coast Guard. US Coast Guard, very good. US Coast Guard. Very good. Similarly, each country will be having flag state, port state, coastal state, and some of them may also have search and rescue agencies. For example, to provide search and rescue services, India has taken the job. Other countries surroundings, Sri Lanka and all that, they are not responsible for SAR activity. India is responsible for that in this whole region. So these are the authorized users. All these users will be able to use the data which is from here. So what is the job of data center? To collect all this data, store it, and disseminate or distribute the data as per need to know. As per need to know, that means फ्लैग स्टेट जितनी जरूरत हो, वैसे तो सारा उसी के पास है. पोर्ट स्टेट जितनी उसको जरूरत हो, कोस्टल स्टेट जितने की जरूरत हो, सार एजेंसीज जहां तक उसका सर्विस एरिया है वहां पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. सो आर वी गुड अप टू दिस? ये सारा नोट कर लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, मैं मिटा रहा हूँ ये पार्ट, मैं यहाँ पे फिर से बनाऊंगा सो दैट आई कैन गो फॉरवर्ड. नॉट टू मच, एक स्टेज और रहता है. डिलीट करूं मैं ये? Yes, sir. ओके. So we had DC here. We had multiple DCs. DC1, DC2, DC3, DCN. All are having their data from their flag registered vessels. Now, before we go forward, talking about the data centers, there are three types of data center known as national data center. There is cooperative data center, and there is something called regional data center. Additionally, there is one more which is called international data center. So the data centers can be different types. What is the difference between each of them? National data center collects data from only flag vessels. It is not necessary for it to collect data from any other country. One country, one data center, only that country's flag vessels. For example, India is NDC. India is having national data center. जो DG shipping है, सिर्फ अपने फ्लैग वेसल्स को ही डेटा कलेक्ट करता है. But it is possible that some of the countries join hands together and say, why do we need to have so many of data centers? Let us put together, we'll make one data center. We'll make one data center. We'll call it
cooperative data center, and we will all will send to the same thing. So German registered vessel sending to one data center, Denmark sending to the same data center, France transmitting to the same data center. So all of them are sending to one data center. Why? Because they have tied up together, they are cooperating together to make one data center. और सबका फ्लैग वेसल अपने नाम आइडेंटिफिकेशन से तो आइडेंटिफाई हो ही जाएगा. So this is called cooperative data center. Most of the data centers of the world are NDC. Most of the data centers are national data centers. But cooperative also is one, like I was showing in the example, it is European Union. There is another example of Pacific Islands. Pacific Islands मतलब Pacific Ocean में छोटे-छोटे islands है उनका. Next one is regional data center. This and this are same basically, but this is constrained by the region. एक region के जितने countries हैं वो सारा एक ही data center को भेजते हैं. अपने area के, अपने region के सारे countries वहीं पे भेजते हैं. There is only one example of that, which is Brazil. Remaining all are national data centers. So कुछ 100, 150, 100, 125 national data center, 2 cooperative data center, and only 1 regional data center. Each country, each flag administration must nominate a data center to which their ships will be sending position reports. For example, Germany, a contracting government, it has nominated CDC, European CDC, कि मेरे जहाज यहाँ पे भेजेंगे. इन्होंने भी नॉमिनेट किया मेरे जहाज यहाँ भेजेंगे. इन्होंने भी किया कि मेरे जहाज यहाँ पे भेजेंगे. So each country must nominate a data center where all their ships will be transmitting the data. So we have seen here and similar situation for regional data center also. If a country is not having national data center, does not want to get included in cooperative data center, does not want to get included in regional data center, they can send their data to international data exchange, which is managed by IMO. So they also run a data center. They can collect data from any country if they so choose to. So those ships will be sending data to international data center. The 4 types of data centers. Are we good here? सर एक बार रीजनल डेटा सेंटर बता दो, एक्शन प्रॉब्लम आ गया था. Regional. यस सर. Basically, regional and cooperative are similar type of data centers. Here there are multiple countries who are cooperating with them, probably sharing the cost, spending from common fund. Regional data center, there is one data center managed by the one country, but they have allowed other countries to send the data in their data center. So for example, in the South America, Brazil is having a regional data center
For example, Argentina also will be sending to same data center. Paraguay will be sending in the similar. Ecuador will be sending there itself. So in that region, one data center where all countries are sending their, the ships rather, are sending the reports to one regional data set. Are we good? Yes, sir. All right. So for each country, can you name the authorized users again for me? Who are the authorized users? Flag state, port state, Flag state, Flag state, port state, coastal state, port state, search and rescue. state, and Search and rescue. okay. Now suppose we take an example to understand the situation, what is happening between them. Let us say take the case of India itself. Southern coast, southern part of India. Suppose there is a distress happening here. Whose responsibility it will be to provide assistance to them? India. India, Indian Coast Guard, Indian Navy. So SAR agency is Indian Coast Guard, for example. But there is an Chinese ship here. There is an Australian ship here. There is also an Indian ship here. The Indian Coast Guard is little bit away. इनको पहुंचने में टाइम लगेगा. Meanwhile, if they have information about the ships in this area, can they direct, please go and help, I'm coming? Should they be telling the Chinese vessel, please proceed, I will be coming shortly, but meanwhile you proceed? Because safety of life, providing assistance is obligatory for all ships. All the ships, irrespective of nationality and anything, nothing stops them. It is my obligation to provide assistance. So the Chinese vessel, the Australian vessel, the Indian vessel, all have responsibility to provide assistance. Responsibility. Correct? Yes, sir. Yes, yes, sir. इंडियन कोस्ट गार्ड के पास किसका इंफॉर्मेशन होने की उम्मीद है? इंडिया के सर. इंडियन शिप का सर. इंडियन शिप का तो मिल जाएगा. इंडियन शिप का मिल जाएगा क्योंकि ये इंडिया के डेटाबेस में है और इंडिया के डेटाबेस में ये कोस्टल एजेंसी भी है. तो इंडियन वेसल का तो लोकेशन मिल जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड को. व्हाट अबाउट दिस? सर नीड टू नो बेसिस पे उनका भी इंफॉर्मेशन हो. तो इंडियन कोस्ट गार्ड को इनका भी पता होना चाहिए ना, तभी तो वो इस एरिया में प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे सर्च एंड रेस्क्यू का, है कि नहीं? लुक्स लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड को पता होना चाहिए था इस पूरे एरिया में जो भी जहाज होगी उनको सबका आइडिया होना चाहिए. इसको पता होना चाहिए था इंडियन वेसल यहाँ है, चाइनीज वेसल यहाँ है, ऑस्ट्रेलियन वेसल यहाँ है. इंडियन कोस्ट गार्ड को ये सारा लोकेशन पूरे में पता होना चाहिए, तभी वो अपना काम कर पाएंगे सही से. इज इट लॉजिकल और नॉट? यस सर. All right. So this is happening. Indian Coast Guard will be knowing about all the ships जो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, जहां पे भी हो इंडियन कोस्ट गार्ड को उसका पता होएगा. कैसे होएगा? तो वही समझाने के लिए कैसे होएगा मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया. All these data centers are connected to each other by something called international data exchange.
they are connected via internet to each other through something called international data exchange. It is nothing but an internet server. Through an internet server, all the data centers are connected with each other. यहाँ से ये इससे बात कर सकता है, इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है. Each one of them are connected with each other. Are we right now connected or not? Yes, sir. कैसे? Yes, sir. Internet. The internet servers. माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे आप लॉगिन किया आपने? Yes, sir. मैंने भी Yes, sir. लॉगिन Yes, किया. sir. सब Yes, sir. आपस में बात कर रहे हैं. Yes, sir. जो अपना बुक दिखाएगा सब लोग पढ़ सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is how it is happening. All the data centers are logging into where, which server? International Data Exchange. International Data Data Exchange. It is located in Lisbon, पोर्चुगल में. जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर अमेरिका में है, कहीं गूगल सर्वर कहीं अमेरिका में है, वैसे ये लिस्बन में है. मैनेज्ड बाय IMO. So all the data centers are connected to this internet server. और कोई भी है वो किसी का भी डेटा उठा सकता है. Anybody can read anybody's data. DC1 can read the data from DC2, DC3, DC4, DC5, DCN, anything. So now that we are connected, let us say Teams पे ही, Microsoft server पे, तो should I be allowed to open your phone book और सारा मैसेज पढ़ लूं, सारा व्हाट्सएप पढ़ लूं, तुम्हारा सारा ईमेल पढ़ लूं? Should it be allowed for me or not? No, sir. No. जितने की जरूरत है, जहां हम बात कर सकते हैं, जो मेरा काम है आपके साथ, उतना अलाउड है. मैं बात कर सकूं, क्वेश्चन पूछ सकूं, जवाब सुन सकूं. दिस इज माय रिक्वायरमेंट. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now when you are connected, you are having to see me. तो आपको क्या अलाउड होना चाहिए कि आप मेरे कंप्यूटर से सब उठा लें, मेरे घर में घुस जाएं और No, सारा sir. इंफॉर्मेशन आप ले लें No, मेरा? sir. Is it necessary? No. But when I want to share my screen PPT, तो वो मैं दिखा लेता हूं. Yes, sir. So you can get access to that. So data is available, but only what is needed for me. आंख मूंद के कुछ भी डेटा उठा लें, not possible. Only what is my requirement, on the basis of that I am able to access the data. So what is my need? How it is defined? तो फिर चलते हैं एक एग्जाम्पल. तो फिर एक एग्जाम्पल में चलते हैं. Again the same thing. There is Bombay. There is, let us say, Cochin. There is Chennai. There is Vizag. बॉम्बे का काम अपने इस एरिया में होगा, इस कोऑर्डिनेट्स के भीतर में होगा इसका काम. जो यहाँ पे आएंगे, जो जाएंगे, उन्हीं का डेटा चाहिए उसको, या नहीं? Sir. कोचीन वाले को अपना एरिया का चाहिए, चेन्नई को अपना चाहिए, वाइजैक को अपना चाहिए. तो सबका एरिया बटा हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. Yes, Yes, sir. तो जब हम बॉम्बे लिखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेंगे कि बॉम्बे कैन एक्सेस डेटा विद इन दिस एरिया ओनली. इफ कोचीन इज देयर, then they can access in this area only.
Chennai can access data when the ships are coming in this area, then only they can access the data. बाहर होगा तो चेन्नई को नहीं मिलेगा. नंबर 1. तो ये हमने पोर्ट स्टेट के बारे में देखा. नाउ सपोज इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी. इंडियन नेवी is protecting the territory of India, Indian Ocean. Indian Coast Guard or Indian Navy must have all data within this area or not? Yes, Sir. sir. That means जो भी authorized users हैं, flag state उसका एरिया डिफाइंड होता है. पोर्ट स्टेट उसका एरिया डिफाइंड होता है. हर पोर्ट का अपना एरिया डिफाइंड है. कोस्टल स्टेट उसका अपना एरिया डिफाइंड है. स्टार एजेंसीज उसका अपना एरिया डिफाइंड है. जब वो लॉगिन करेंगे तो उनके एरिया में ये जो जहाज उसके वाले एरिया में होंगे उसका सबका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. दूसरे जो से बाहर होंगे उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसए में 500 जहाज हैं, मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहा हूं, तो यूएसए के जो 6 जहाज हैं मेरे एरिया में, मैं जब लॉगिन करूंगा तो 6 जहाज का डेटा मिलेगा जो मेरे एरिया में. जो बाकी जगह घूम रहे हैं दुनिया में उसका डेटा मुझको नहीं मिलेगा. फिल्टर होकर के मुझको वही मिलेगा जो मेरे एरिया में है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir. Yes, sir. So this is what is happening in this case. So all the data centers are connected to each other with IDE, International Data Exchange. But this exchange of data is happening as per rules of exchange of data called DDP. The data exchange happens as per DDP, which is Data Distribution Plan. ये DDP सभी केस में मेंशन होता है. इसका ऑथराइज्ड यूजर्स होगा, पोर्ट स्टेट होगा, फ्लैग स्टेट होगा, कोस्टल स्टेट होगा, सभी के एरिया डिफाइंड है अपने. इसके जो ऑथराइज्ड यूजर्स है उसका डिफाइंड है एरिया. सबने अपने अपने एरिया डिफाइन कर रखे हैं अपने यूजर्स के. जब वो लॉगिन करते हैं सिस्टम में तो उनके एरिया से में जो भी है वो यहाँ से भी सब से निकल के उसका डेटा मिल जाता है. अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? Understood. ऑल राइट. पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए टू सी ऑल द कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, दैट एवरीथिंग इज वर्किंग आउट वेल, देयर इज a post created in the IMO as LRIT coordinator. In IMO, there is a person or a group of persons who are designated as LRIT coordinator. इनका काम है सभी गवर्नमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना ताकि एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज और सब कुछ ठीक ठाक चले. LRIT system is working fine. It is the responsibility of the LRIT coordinator. So in the whole system, what we have seen that there are multiple layers. पहला क्या था? Ships, LRIT equipment. किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज बंद करो. साहिल. Number 2, we had communication service provider. Number 3, we had application service provider. Number 4, आगे बताओ क्या था?
LRIT data center. LRIT data center. Then BE. International Data exchange. data center. very good, international data exchange. छठा कंपोनेंट क्या था इसमें? DDP. Very good, DDP. And the seventh one is the LRIT data center. Sorry, LRIT coordinate. So, do we understand the LRIT structure? Very Yes, good. Ridesh, Yes, sir. Yes, sir. Ridesh, clear है? Yes, sir. Any questions? No, sir. Any questions, gentlemen? No, sir. No, sir. All good, sir. Thank you. I will, sir. पढ़ेंगे तो और थोड़ा होगा. अगले क्लास में we will terminate what is the benefit of LRIT. ऑथराइज यूजर्स के बारे में तो बात किया, वो थोड़ा बहुत देख लेंगे कि कैसे ये अपना काम कर सकते हैं LRIT डेटा से. तो 15 मिनट का और क्लास होएगा. आफ्टर दैट दिस टॉपिक विल बी ओवर एंड देन वी विल स्टार्ट VDR, वॉइस डेटा रिकॉर्डर. अगले क्लास में which is happening just after lunch, then we will do VDR. After having completed this, we'll go through the slides also, then we'll be done. Chalo, bye bye. Thank you, Thank sir. you, Thank you, sir. sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Chalo, We'll board का answer दे दो. lunch. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. bye bye. Signing off. Signing off.